भाई मेरी तो पूरी की पूरी ज़ात जो है वो ज़ात मेरी वैल्यूज़ का मजमुआ है। इफ़ यू एंटर अ रूम, व्हेन यू एग्जिट यू शुड हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। जितना वक्त हम दफ्तर में अपने कॉलीग्स के साथ गुजारते हैं, हम अपने बच्चों पे उतना वक्त नहीं गुजारते। वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड थिंग्स इन लाइफ इज़ द स्पैन ऑफ अ मोमेंट। यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, ये एक ब्लेसिंग थी या एक अपने आप में चैलेंज था? द लेट राशिद अब्दुल्ला साहब ऑफन यूज्ड टू से झुकता हुआ तोलो। जब वो स्टूडियो में आते हैं मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, इज़ द डिज़ाइनर बिगर और इज़ द डिज़ाइन बिगर? डिफरेंस बिटवीन art and design is there is a client and the client has a need and that need needs to be addressed. We are the homemaker's life partner. Habitt city in Karachi, this used to be a home. Home is where the heart is. We have more guests. Oh, nice. We wanted to achieve in terms of creating a space where a haven where people could come from the busy city life and find a bit of themselves that they lose every day. एक फुलफिलिंग गुफ्तगू, उसके लिए या तो आपको देखें हमारा पॉडकास्ट देखना पड़ता है। हमसे अगर जेंजी से पहले वालों को देखा जाए, वो पोजेशंस पे खर्च करते थे, ये एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं। एक अदब फेस्टिवल में आके buying a new book and getting it signed by the author, is that commerce? Is that an experience? That's life at its best, perhaps. Assalamu alaikum and welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. For those of you who follow me on LinkedIn, मैंने आपसे शेयर किया था कि हाल ही में एक बिजनेस ग्रुप के वैल्यूज़ डे पे मैं पहुंची। मैंने बहुत सारे लोगों को HR डे, टीम बिल्डिंग डेज सेलिब्रेट करते हुए देखा, बट वैल्यूज़ डे, व्हेन आई गॉट द इन्विटेशन आई वाज वेरी इंट्रीग्ड। और वहाँ पे जाकर मैं जितने लोगों से मिली, मुझे लगा कि शायद कोई ट्रेनिंग होगी, वैल्यू सेटिंग की जा रही होगी, but it was actually a reminder of what the founder had in mind when the business group came together. This was also a tribute to the late Rashid Abdullah Sahab, who's known as a very prominent businessman of Pakistan and an equally renowned and well-reputed philanthropist. Pakistan के बहुत सारे philanthropic initiatives के बानी रहे हैं. He was also the first chairman of the board of directors of TCF. इसके अलावा मुख्तलिफ initiatives के पीछे रहे. And it was a day when the whole group, and especially his peers, his colleagues, वो लोग जिन्होंने शायद अपना काम उनके साथ शुरू किया था, they all came together and they started to think and talk about the values. एक तरह से it was pledging themselves again to the same values. अच्छा, कभी कभार इंसान ये सोचता है कि वक्त गुजरने के साथ हालात और लाइफस्टाइल्स इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि probably the values are also evolving. But when it comes to honesty, when it comes to excellence and compassion, they are timeless. And today, let's delve deeper into the ethos and the values of this group, the IBL Group, SERL Private Pakistan Limited as well. इसके अलावा मुख्तलिफ brands जो इनके अंदर आते हैं. I've recently had a good fortune of understanding a number of their businesses and brands, and thought that this conversation is going to benefit so many of you who are aspiring to be entrepreneurs, who are aspiring to be business leaders and professionals, to have some guiding light in that regard. So आज हमारे साथ मौजूद हैं the CEO of IBL Group, Mr. Munis Abdullah. Assalamu alaikum, Munis. Walaikum assalam. So it was very inspiring, by the way, to be there at the Values Day. और वहाँ पे मेरे ख्याल में मैं आपकी presentation से draw करूँ. So you took us back to a time जब मुल्कों की, माशरों की, रियासतों की अख्तार होती थी, और आज हम देखते हैं कि जो इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है वो यही वैल्यूज़ हैं. People sometimes call this world the dog eat dog world. People are very motivated by the profit, and that's kind of what has gotten us here, कि हमें फिर ख़ास तौर पे बात करनी पड़ी है इम्पैक्ट की, सस्टेनेबिलिटी की. If I ask you personally, what shapes your values, Munis? Well, I think it's a difficult question in the sense that अगर आप किसी से पूछें what are your values, भाई मेरी तो पूरी की पूरी ज़ात जो है वो ज़ात मेरी वैल्यूज़ का मजमुआ है. बिल्कुल. So
to isolate, I mean asking someone what values shape you or what are your values is asking, आपकी पहचान क्या है, what do you stand for, what do you strive for, what do you want to achieve, what do you see in the future, how do you understand the past. So all of that, what are the experiences of life that have shaped your being. So difficult question, and perhaps um, the way I'd answer it is living a life worthy of um, living a life that is worthy. S- अगर एक कमरे में आप बैठे हैं और वहाँ से उठ के अगर आप गए हैं, तो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, अगर उनके जहन में या दिल में ये ख्याल आया है कि वी हैव मूव्ड अ स्टेप फॉरवर्ड, हमारी गुफ्तगू से जो है कोई फ़ायदा हुआ, adding value to another life, that I think is one of the most important things that drive me every day. Whether it is with a complete stranger, someone I'm meeting for the first time, or a dear friend, or someone who works with me, someone who's walking by और उसकी शक्ल जो है आज थोड़ी सी उतरी हुई है, just taking a moment and having a conversation, just finding out is everything okay. Because जिन लोगों के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं, whether that is our work colleagues whom we spend most of our lifetime with. बिल्कुल. In fact, once I was, and it works both ways. Once I was talking to a friend. He migrated to outside the country, and बाहर different value set है, और वो परेशान थे, मेरा बेटा है, जवान हो गया है, कैसे आगे चलूँ वगैरह वगैरह. एंड मैंने मुड़ के ये मुझे उस वक्त एक ख्याल आया है कि जितना वक्त हम दफ्तर में अपने कॉलीग्स के साथ गुजारते हैं या हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हम जितनी मेहनत उनके ऊपर करते हैं, इन द सेंस दैट इट अपस्किलिंग दैम, काउंसलिंग दैम, हम अपने बच्चों पे उतना वक्त नहीं गुजारते. ये तो when he घर वालों was का शिकवा भी होता है so ना? so now this is so जब वो परेशान हो रहे थे तो मैंने उनसे ये कहा, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, एंड एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए ये अंदाज़ा करते हैं या ये कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से, बिकॉज वो हम काम सोच के जब कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट हम ये समझ रहे होते हैं कि और जस्ट बीइंग देयर ऑनेस्टली एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अपनी औलाद को भी और अपने पेयर्स को भी समझें and help for them to move forward. Now नहीं, आई एग्री विद यू 100% कि लोग जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर आपका कोई इम्तिहान है या किसी पोजीशन पे आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उस लम्हे के लिए पूरी ज़िंदगी आपको तैयार करती है, और उसमें छोटे बड़े वाक़यात जो शऊर में या लाशऊर में होते हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग यू. बट आजकल मैं बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ जिनके पास ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, स्टार्टअप कल्चर के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मुनिस उनमें से अक्सर का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि वी डोंट हैव द कैपिटल. हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन मेरे आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए. यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली. ये एक ब्लेसिंग थी या एक अपने आप में चैलेंज था? in terms of specific action, I'll come to that separately, but मेरे ख्याल में हमारी औलाद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ज़्यादा सीखती है. And I can't think of many specific things that my father or my mother would have done. I mean, I can recall one instance. मेरा A लेवल में एडमिशन हो रहा था और उसके इंटरव्यू के लिए वालदैन को साथ जाना था. तो हम बैठे हुए थे, it was myself and my parents sitting, and the principal of the school was interviewing us. And I think the principal asked कि आपको अपने बेटे की किस बात से पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है, या something like that. And my father, it was a question like that. And my father's answer was,
मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते. And I remember at that moment, now I'm thinking back, I'm recalling, the little white lies that I might have said, and I'm saying to myself, oh, this is, uh, never ever again. So, not to and my mother is even more specific about even the slightest of deviance from the truth. तो मेरे ख्याल में foundationally that is something that we were brought up with. Second thing was a giving spirit. With my children, I said to them something simple. I said to them, there was some fundraising campaign happening in school, and they came कि भाई पैसे दें. I said कि आप जितने पैसे कलेक्ट करेंगे, I'll match it. वो डबल हो जाएगा. Zabardast. Incentive to actually do more for them. Yeah. है ना? So I said, जितना जमा कर सकते हैं जमा करें. So वो जमा करते थे, फिर उसके बाद अपनी ईदी निकालते थे और अपनी ईदी में से आधे से ज़्यादा पैसे भी उसमें अंदर डाल देते थे कि ये जो है ये डबल हो जाएगा, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट. And that's something that came from my childhood, because I remember as a child hearing my parents say that हाँ मतलब कि इतना हिस्सा जो है ज़कात अपनी जगह पे है, मगर इतना हिस्सा जो है my father every month would take out of his salary and put in a separate envelope that anyone who comes to him must be taken care of. तो तैयार करने के बारे में अगर बात करें तो मैं अगर अपनी औलाद से बात कर रहा हूँ और मैं अपनी औलाद से ये कह रहा हूँ, बी अ फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड. इफ़ यू एंटर अ रूम, व्हेन यू एग्जिट, you should have left something behind, something positive behind, something meaningful. So it's in as a person, as a human being, it's everything, and it's not different. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेरी हैयत जो है वो बतौर इंसान ये है और कारोबार में ये है. This ethos is actually in our business as well. So my father in his business dealings would go above and beyond to deliver on his promises. He would go above and beyond, alhamdulillah, in his dealings. तो बल्कि आपकी इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि at the values day a lot of his peers were there, and even today जो लोग rise up करके leadership positions पे चले गए हैं वो कहते हैं कि the late राशिद अब्दुल्ला साहब often used to say झुकता हुआ तोलो. एक तो उर्दू ज़ुबान का एक अपना लुत्फ़ है, तो जब मैंने ये सुना I was trying my best to loosely translate that, and I was like यार सारा वो टाइम आपके जहन में आ गया ना कि जैसे पहले स्केल्स हुआ करते थे. आप आमतौर पे लोगों को कहते हैं कि हाँ जी नाप और तोल पूरा होना चाहिए, बट झुकता हुआ तोलो इज़ so beautiful and so simple. It's about excellence कि यानी think about the other person more than yourself, कि अगर the scales are tipped in their favor, that should be ideal. But tell me something, जब हम कह रहे हैं कि एक बिजनेस फैमिली में आना, ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द देखना, इनिशिएटिव्स लेते हुए, the spirit of giving is there. Munis, I would have imagined you going to a business school, or on the other hand you went to IVS, you went to an art and design school. ये किसका डिसीजन था? ये आपका डिसीजन था, फैमिली का डिसीजन था? I would love to know that. मैं 12 साल की उम्र का था और उस वक्त जो है CNN नया नया ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था. तो देयर वाज द पीपल्स टेलीविजन नेटवर्क. दे वुड ब्रॉडकास्ट CNN थ्रू आउट द डे, और शाम में NTM की ब्रॉडकास्ट होती थी. एंड आई सॉ दिस एड ऑन CNN. It's a black background. We see a black background behind me also, and it's just like completely pitch black. Yeah. Okay. And we see this basketball comes out of nowhere. And the way every ball is, it bounces. With every bounce, it will bounce lower and lower because of gravity. It's natural. तो इसके ऊपर एक नरेशन चल रही है, और नरेशन ये चल रही है that your business is like this ball.
and it's going to bounce lower every time until you start advertising. And then magically that ball starts bouncing again and it bounces out of the frame. And you can't see any special effects or anything. But I still can't figure out उस ज़माने में उन्होंने कैसे shoot किया होगा. But then that thought stuck in my head. How did they shoot this? And I was in love with the simplicity. और उसके थोड़ी देर के बाद जब NTM की ब्रॉडकास्ट शुरू होती है और उसके बाद किसी पॉपुलर जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग का जिंगल चलता जो कि किसी या तो ईस्टर्न सॉन्ग या वेस्टर्न सॉन्ग की जो है वो कॉपी बना के और उसके अंदर जो है वो झनकार के साथ जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बेच रहे हैं एंड आई वुड थिंक दैट दिस इज व्हाट इज दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड and I would love to do it. I would love to figure it out. And at that age, I wanted to go into advertising. And not for a moment did my father say, this is not what you're supposed to do. And he encouraged me. And from the age of 16, हर साल मैं जो हूँ गर्मियों की छुट्टियों में जो है कभी इंटरफ्लो में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कभी मैनहट्टन लियो बर्नेट में कर रहा हूँ, कभी जो है मतलब कि आई इंटर्न विद आसिम रज़ा learning filmmaking. I went to Arshad Mahmood to learn a bit about music because that plays its own part. And then I ended up in Indus Valley. I spent 4 years there. I graduated. And then I ended up at an advertising agency as an art director. So my first job, I'm an art director, and I'm sitting over here now. I'm doing it for the passion. I'm doing it to achieve a certain amount of excellence and take the industry forward. I mean, it's not it's not make your own dent in the universe, as they would say. Yeah, wanted to make a mark, I mean, right? It's not actually. I'd like to make a distinction. It's not about making your mark. Okay. It's about improving the standard. It's about playing your part. It's not making your mark, it's playing your part. Absolutely. Playing a part. It's not about me, it's about the effort, the work. मेरे लिए मतलब कि मैं अक्सर जब किसी डिज़ाइनर को हायर करता हूँ और जब वो स्टूडियो में आते हैं मैं उनसे एक सवाल करता हूँ. मैं उनसे पूछता हूँ, इज़ द डिज़ाइनर बिगर और इज़ द डिज़ाइनर बिगर और इज़ द डिज़ाइन बिगर? Because अगर हम दुनिया में देखें तो there are people who like to wear certain designer brands because उसके ऊपर वो they're literally branded. And they're like a walking billboard. Yeah, yes, and I wouldn't want to do that. I wouldn't want to be branded as someone else. So I would ask our designers this question: is design bigger or is the designer bigger? Because for me, it is always design that's going to be bigger because that's what is going to go out there and become a part of the lives of the people that you're serving. Because at the end of the day, the difference between art and design is there is a client and the client has a need, and that need needs to be addressed. That problem needs to be solved. And I think if we apply that to Habitt, the furniture store, the home store, it's that fine line where aesthetics meets functionality, because you're designing for people who would want these beautiful items. You're making their dreams come true. जैसे उन्होंने सोचा था कि मेरा ideal घर ऐसा होना चाहिए, मेरा lounge ऐसा दिखना चाहिए. You're even getting into designing bespoke kitchens for them. So the idea is to be a part of their dream. मैं इसको एक और तरीके से लेता हूँ, मतलब कि so the fine line that we try and pursue inside Habitt. Now, outside we say that we are the complete home store, but inside our ethos is we are the homemaker's life partner. What an interesting line. There's a bit of wordplay happening there, huh? The homemaker's life partner. We are the homemakers. बेचारा husband क्या करे फिर? Who says the husband can't be the homemaker? मुझे लगा husband सिर्फ पैसे दे और homemaker आके इस life partner के साथ चीजें choose करें और ले जाएं. नहीं, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, अब हम 1 मिनट के लिए we'll just so while I have made the distinction that the homemaker can be anyone, any gender.
Yes. तो इसको हम एक सेकेंड के लिए पार्क कर देते हैं. हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर दैट रोल बिलोंग्स टू द मदर. नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ लेट्स टेक अ मिनट एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ मदर एज अ होम मेकर. In the morning, everyone's gonna leave. बिल्कुल. चाहे वो बच्चे हों या कोई काम Husband करने जा रहा है, they're gonna leave. Hmm. And they're gonna leave behind a mess. And they're gonna come back. And when they come back, they're gonna bring all of their stresses and they're gonna have their own issues that they're dealing with. बिल्कुल. And their expectation is going to be, now that we're home, everything should work. Everything should be in its place, and everything should be served on time, and literally the home, what makes a house a home is that functionality, that soft layer, you know. And that smoothness, everything is just flowing. So there are two bones and there is cartilage in between. Yeah. So the bones rub against each other, it's a disaster. So the cartilage, what makes the house a home? It's what the homemaker's doing behind the scenes to live up and she is doing it out of a passion because she wants her household and everyone in it to be happy, and that happiness is going to draw from the fact that when they come back everything is in its place, and जो भी उनके stresses थे दिन के वो जो लेकर आए, they are removed, reset and ready to go out the next day. So what we say internally is that if we can be the homemaker's life partner in helping her run her house as a home, then that is the foundation of a functioning society, because when those people go out refreshed, reset, then they can take the world forward, manage their stress, because there is no stress when they go out the next day again because they're refreshed. बिल्कुल, and they're inspired to do more as well. But while you were talking, Munis, मेरे जहन में आ रहा था, अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक कंज्यूमर सर्वे किया गया, साइजेबल नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, और उनसे पूछा कि 1-2 साल से जो टर्मोइल चल रहा है, politically their problems, economically their problems, people are actually very concerned. 98% of the people who were asked, who were surveyed in this survey, उन्होंने कहा कि जी हम अभी ना घर ख़रीदना चाहते हैं ना गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, because हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है. So is that also reflecting in the trends and patterns you see with the sales of Habitt, कि लोग अभी थोड़े घबराए हुए हैं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे? माइंडसेट क्या है इस वक्त लोगों का? Sidra, let's divide the question into two parts. One is that certainly people are trading down in terms of the spend. So if they were spending more on something, they would want something which is more value driven. Sahi. And we as the homemaker's life partner are responding to find the right balance of value for them. So the other part, the way that I would answer this question is that a lot of our business comes from weddings. A home is born when a couple gets married. Okay. That's in technical terms we call it point of market entry. A home is born when a couple gets married. So that home may be one room, but it's still a home. उसके अंदर नया तौलिया होगा, उसके अंदर नया कालीन होगा, उसके अंदर नया बिस्तर होगा. And depending on the lifestyle and the setup of the family, now that home can be as value added or as serene and sparse. मतलब कि 2 तरीके के बेडरूम होता है ना. एक बेडरूम होता है जो कि होता है माइक्रो होम, कि मुझे अपने बेडरूम में टीवी भी चाहिए, मुझे अपने बेडरूम में फ्रिज भी चाहिए, मुझे अपने बेडरूम में सारी चीज़ें चाहिए. इट्स लाइक अ मिनी होम. और कुछ लोगों के लिए बेडरूम क्या होता है, थोड़ा स्पार्स होता है. आई मीन दे वांट द बेडरूम टू बी वेयर दे गो टू रिलैक्स. यानी उनको तो गैजेट भी नहीं चाहिए, उनको कोई टीवी भी गैजेट नहीं चाहिए, दे डोंट वांट अ टेलीविजन, दे रादर हैव अ बुक. सो वो बेडरूम अलग तरीके से डिज़ाइन होता है. बिल्कुल. सो सर्कलिंग बैक,
to your question, so people, in terms of disposable income, we do see a change in the kind of spend we see across our departments, because as a complete home store, we try and cater to all of the needs of the home, every room. मतलब कि एक कमरा क्या होता है, एक खाली कमरा है, अब उस कमरे के अंदर अगर मैं एक बिस्तर रख दूं आप उसको बेडरूम कहेंगे, और अगर मैं एक कमोड डाल दूं तो आप उसको बाथरूम कहेंगे. So if you put a few sofas, and if they're casual, you'll call it a living room, and if they're formal, you call it a drawing room. Okay. It's still an empty room. And that empty room, finding its soul from the pieces that you put inside, from furniture to its accessories, define that personality. तो हमारी कोशिश जो है वो ये है कि we have different ranges that we carry. So we have a starting from range. Internally, we call it our starting from range. Externally, it's called our bargain series. Internally, we have a best price range. We have a great value range. So we try to cater to different demographics, and within that demographic, we try to give them the whole experience. और ग्रोथ सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे देख रहे हैं? कौन सा डेमोग्राफिक इन द लास्ट 5 years बहुत ग्रो कर रहा है, और इसी हवाले से कहा जा सकता है कि आने वाले 10 साल में भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा? देखें, जो हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम की रेंज है, दैट नेचुरली इज़ फाइंडिंग अ लॉट ऑफ फुटिंग. ओके. एंड बट उसके साथ साथ हमारी जो प्रीमियम कैटेगरी है वो अपनी तरफ जो है, बिकॉज आई मीन लेट्स फॉर अ मिनट टॉक अबाउट द अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी. तो जो हमारी प्रीमियम रेंज है वो अपनी जगह पे सही है. जो मिडिल रेंज है वहाँ पे लोग टूट रहे हैं. सो या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स एक्चुअली वेयर वी वांट टू बी. वी वांट टू गिव ग्रेट हमारी जो बेस्ट प्राइस की रेंज है, where we want to give a little bit of real wood also, but use it so judiciously that our consumers get that authentic wood experience at the best price possible. So we call it our best price range. वहाँ पे जो है, from there you move to your HPL or high pressure laminate or your regular lamination range. So we want to, we hope that with time, people as they grow, मतलब कि एक ज़माना था जब एक बिस्तर जो है वो 30-40 साल चलता था, बट अब लोग जो हैं as they work and their income improves, then they want to upgrade. They want to upgrade their lifestyle accordingly. पर चीज़ें बदलती भी तो है ना. लाइक हो सकता है आपने एक डबल बेड लिया हो या सिंगल बेड, लाइफ सिचुएशंस और लाइफ फेज चेंजेस एंड यू वांट टू चेंज दैट. बट आई वांट टू आस्क कि एक तो प्राइस पॉइंट हो गया, वो बड़ा अहम है, लेकिन अगर मैं समझने की कोशिश करूँ पाकिस्तान को एज योर कंज्यूमर बेस, एस्थेटिक्स कैसे बदली हैं? यानी क्या हमें, अगर मैं सिर्फ कराची में देखूं तो हमारे जो लिविंग क्वार्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, स्पेशली जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, छोटे कमरे होते हैं. डू दे वांट मिनिमलिस्टिक फर्नीचर? आर दे स्टिल लुकिंग एट एलैबोरेट थिंग्स? हमारी एस्थेटिक्स हमें कैसे डिज़ाइन कर रही हैं और ड्राइव कर रही हैं? पता है, इसको हम let's flip this question. Okay. So we have been alhamdulillah in Karachi for more than 20 years. We've been in Lahore for about 10 years. जब हम लाहौर जा रहे थे तो हमारा सबसे पहला सवाल ये था, because when we did the market survey there was no store like Habitt. वो aesthetic था ही नहीं. तो अब हमारे लिए सवाल था, भाई हम कंटेम्प्रेरी फर्नीचर लेकर जाएंगे पसंद तो भी आएगा या नहीं, तो वो लाहौर में बिकेगा या नहीं बिकेगा, सही, वो जमिएगा है नहीं. तो सही. अब हम वहाँ पहुँचे एंड देन वी टुक अ रिस्क. और रिस्क क्या, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले भी किसी से गुफ्तगू हो रही थी और मैंने आई सेड दैट there's a fine line between risk and belief. So let's not call it risk, let's call it belief. So we believed in our portfolio and we said that, okay, even if it takes us a few years
to establish we are going to take our contemporary furniture line. Because यहाँ पे अगर नहीं है और लोगों को देख देख के आदत वक्त के साथ होगी तो फिर then we will be known for it. Absolutely. The new trend gets the advantage over there. और response क्या है अब इतने सालों के बाद? People love it. You've just so opened another store. We've just in Lahore, opened है ना? we've just opened another store in Y Block, Lahore Defense area, and the response is alhamdulillah very good. So to answer my earlier belief, so what happened was we went both ways. Okay. So we realized that we can't just be contemporary because वो belief जो है it needs to be commercially sound as well. यहाँ पे कराची में अपार्टमेंट्स का एक सर्टन स्केल है, तो हमारे सोफ़े जो हम बनाते थे उनका एक सर्टन स्केल था. पंजाब में ज़मीन माशाल्लाह ज़्यादा है, तो घर भी ज़्यादा हैं, बड़े हैं. तो हमारे सोफ़े उनके, तो हम जो ड्राइंग रूम के लिए बना रहे थे वो उनके बेडरूम में फिट आ रहा था. तो फिर सवाल ये था कि जी बेडरूम के लिए आपके पास क्या है. And to this day we are resisting the temptation to make those bulky heavy pieces of furniture जिसको देखकर लगता है कि एक पूरा छांगा मांगा यहाँ पे खर्च हुआ है. हम वो नहीं कर पा, वो दैट इज मतलब कि अब वो हम कोर पे आके रुक जाते हैं कि नहीं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे. Elaborate हो सकते हैं, extravagant हो सकते हैं. The opulence has to be there because it's what your customer probably wants, लेकिन अपने स्टाइल में. लेकिन मोनस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हैबिट को लोग जानते हैं, हैबिट सिटी in Karachi. This used to be your home. तो this, from your home to your office to this becoming a city, ये कैसे, how did it happen? And how did you bring yourself to that? लोगों की बड़ी sentimental value भी होती है, अपने घर के साथ गया मैं इसको ये नहीं बनाना. Or is this now your new home? I think देखें, home is where the heart is. सही. So whether it is, मतलब कि अगर आप कह रही हैं आप होम कह रही हैं, तो ये इट्स अ होम फॉर एवरीवन. आपका एक्चुअल घर था. But it's open now. I mean, we have more guests. Oh, nice. And by the way, there is a tree which is almost like 100 years old over here. हाँ बिल्कुल. उसकी क्या हिस्ट्री है? उस पे कोई पता नहीं, मुझे गेस्ट तो नहीं रहते वहाँ पे? I'm almost sure. Because हम यहाँ पे रहते थे. हाँ. तो मैंने जो है वो कुछ पर्दे जो हैं वो घूमते हुए देखे हैं इलाके में. और इनफैक्ट we needed to trim a tree. So one day I walked up to the tree and I made an announcement that we're going to trim it. So if you want to move, you can move. And then we trimmed it and everything was fine. And I knew that tree because उस tree के साथ मेरा bedroom था, और वहीं पे जो है अक्सर जो है वो एक चादर घूमती हुई जो है वो नज़र आती थी. It's almost... You might drive people away in this conversation. लोग यहाँ आने से थोड़ा कतराने लगेंगे, ये ना कहें. लेकिन yes, what I like about the fact is कि so many people use that spot where that tree is, and it's beautiful by the way. अगर आप करीब है तो आप ज़रूर जाके उसको देखें. वहाँ पे छोटी gatherings होती हैं, like if you have people up to 50-60 की पार्टी आप आराम से कर सकते हैं. And I like the fact that so many people are choosing that as a venue. But this place now has a lot of things that you like. For example, Karachi, you being a true Karachiite, also have a place where you get all of Karachi's popular street food. जो कि चाय चाट, चाय छत, जो अपने मर्ज़ी से आप उसका प्यारा सा नाम रखना चाहें, लोग कह सकते हैं उसको. ये आपके इनर फूड लवर की तरफ पॉइंट आउट करता है हमें, या इसका ख्याल कैसे आया मुनस? देखिए, that's what we wanted to do was we wanted to create a community space. And a community space where everyone can find what they like. तो मेरे लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात नहीं हो सकती कि पिछले हफ्ते या कुछ हफ्तों पहले, मेरे लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात नहीं हो सकती कि चंद हफ्तों पहले यहाँ पे हैबिट सिटी में कराची का अदब फेस्टिवल हुआ. बिल्कुल. और उसमें हमारी एक से ज़ायद 3 कम्युनिटी स्पेसेस हैं, और उन तीनों कम्युनिटी स्पेसेस के अंदर
simultaneous events हो रहे थे. So there were a few book, 6-7 book launches. कहीं पे इकोनॉमी की बात हो रही है, कहीं पे अल्लामा इकबाल के पोते जो हैं उनकी पोइट्री रिसाइट कर रहे हैं, फिर कोई प्ले हो रहा है और कहीं फिर मुशायरा हो रहा है. And it was just what we wanted to achieve in terms of creating a space where a haven where people could come from the busy city life and find a bit of themselves that they lose every day in this haven by having a good conversation or listening to a good conversation. Because ये काफ़ी नायाब चीज़ है, एक अच्छी गुफ्तगू, एक फुलफिलिंग गुफ्तगू. उसके लिए या तो आपको देखें हमारा पॉडकास्ट देखना पड़ता है या फिर आपको हैबिट सिटी का कैलेंडर फॉलो करना पड़ेगा सो दैट योर सोल इज़ इनरिच. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन सोल के साथ यू नीड फूड और सोल फूड. So that's where I think chai chat becomes a good combination. But tell me something. I do see you traveling quite often and you're up to some amazing things offshore as well. So ये पाकिस्तान के most loved brands हैं that you have created. Are you planning to take them offshore as well? Well, certainly. मतलब कि आजकल के दौर में मेरे ख्याल में हमारा इंटरनल एक जो प्रॉमिस है या कमिटमेंट है is that we are over the next few years what we need to do is we need to become import neutral for the country and as the first step. We are already the Searle company is already Pakistan's second highest exporter of pharmaceuticals from Pakistan. We are looking at we are already exporting some of our products from Habitt outside Pakistan. So we're just trying to double down on all of those fronts and efforts to perhaps even see how to take our food outside Pakistan. Because there is a great diaspora of Pakistanis and Indians across the whole globe that would crave for our food. मगर आप पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स है, मगर पूरी दुनिया में जो है वो बिरयानी कौन सी है? और बिरयानी है तो बिरयानी कई किस्म की है. इट्स यूजली ब्रांडेड टू बी इंडियन रादर देन पाकिस्तानी. बट यू नो ऑल दीज थिंग्स दैट वी टॉकिंग अबाउट इज़ म्यूज़िक टू आवर ईयर्स. जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी यही महसूस हो रहा होगा. मुनिस, अगर पिछले 5 सालों की विंडो को मैं देखूं, व्हाट हैज़ बिन द मोस्ट चैलेंजिंग डिसीजन यू हैड टू टेक, या कोई ऐसा सेटबैक और फेलियर जिससे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ें लेकिन उस लम्हे वो बहुत मुश्किल था? I think whenever you try and do something new, it is risky. Belief. हाँ. Yeah, but you need to people need to share that belief. So the most difficult thing to do is to articulate and excite your all stakeholders towards that idea. So if I talk about Habitt City, so going through the internal process of setting it up, सिर्फ ये कम्युनिकेट करना इंटरनली अपनी टीम को कि है व्हाट डज अ कम्युनिटी स्पेस हैव टू डू विद अ कमर्शियल रिटेल ऑपरेशन is a journey. Yes. Now that the team we have the space, the team is on board, now we need to sell this to our external stakeholders जिनके लिए हमने ये जगह बनाई है. But Munis, just to debate that, it has been done before. Like अगर हम IKEA की बात करते हैं तो IKEA में लोग जाते हैं और अपनी मर्जी का फर्नीचर खरीदते हैं, घर को अपने सजाते हैं, लेकिन साथ साथ जो उसका कैफ़े है, now it does more business in IKEA and it's become like a separate revenue stream. तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, but why did you find it so difficult to convince the stakeholders? No. Food wasn't difficult. हाँ. It's the City Talks auditorium. Okay. It's the City Arena. हाँ. It's the Grand Tree District. These are the places which have zero commercial return. Okay. But we have created them because we believe कि लोगों के पास, I'm a designer and those people
who are designers and are listening to this podcast or viewing this podcast will understand this very well. The people who are entrepreneurs and want to set up their business now look at this as an analogy. There is, in every piece of design, there is positive space and there is negative space. For that positive space to stand out, you need to give it negative space. Yeah. अगर मैं ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मतलब कि अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अब इस तस्वीर को मैं मुकम्मल तौर पे भर दूं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और मैं भरता जाऊंगा और ये भरते भरते जो है पूरी स्क्रीन काली हो जाएगी। कुछ नज़र आएगा? कुछ नहीं नज़र आएगा। So the yin and yang, if there is what is Habitt City? Let me articulate it in a business sense as well. What social media is to e-commerce, Habitt City is to brick and mortar. Interesting. It's the soul of it in a way. So जहाँ पे पूरी दुनिया, I mean, innovation can happen anywhere. We firmly believe that. तो पूरी दुनिया में एक सवाल है कि भाई ब्रिक एंड मोटर का क्या होगा जब ई-कॉम का बूम है, तो ब्रिक एंड मोटर का क्या होगा? So we know that around the world, particularly in the US, there are huge structures that are shutting down because brick and mortar just doesn't work because there is e-com. और हम ये कह रहे हैं कि e-com, there is a relationship between social media and e-com. So let's remove media and let's remove E and bring commerce and bring social together. So Habitt City is a community space with an integrated commercial, food, infotainment destination where you can come, meet your friends, make new friends, listen to a good conversation, and pick up something that you like, which will be a memory of that good time that you have. Create memories, pick up memories, memorabilia, what rather one would say. But another question that comes to mind is, who are you creating this space for? Is it for Gen Z? Is it for millennials? Is it for Gen X? And on that subject, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, and I want to ask you, because you're a young, dynamic business leader, if I may say so, आपके लिए कितना आसान है Gen Z को मोटिवेट करना, उनको टीम प्लेयर बनाना, उनको एम्पावर करना? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हेड्स आजकल बड़े परेशान लगते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ये अलग ही टाइप के लोग हैं, इनको इंस्पायर करना, इनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। I think, so the first part of your question, which was who this space is for, actually this is a space where everyone comes together. So other festival mein I was in I was asked to be part of a panel, and that panel was being conducted by a Gen Z talent. मगर उस गुफ्तगू के दौरान अगर गुफ्तगू स्टिम्युलेटिंग है तो फिर हमारी कॉन्वर्सेशन ऑफ स्टेज भी जारी रही। सही। So circling back to truth, अब maybe Gen Z is demystified by, because अब आप एक तरफ आप कह सकते हैं कि जी इंटाइटलमेंट की वजह से जो है वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि ये भी होना चाहिए। उससे पहले जनरेशन ही कहेगी कि भाई ये हमने तो इसलिए किया बिकॉज हमें ये कमाना था। बट अगर ट्रूथ पे आ जाएं हम, तो शॉर्टर सप्लाई चेन्स डू मेक सेंस। एंड मतलब कि दूध की बोतल आएगी जाएगी, या हम मतलब कि आज तक जो है having a cola from a glass bottle always tastes much better than out of a can. But it's hard to find those bottles because those supply chains are just not running. But if they were running, if those shorter supply chains were running,
then there would be more sustainability. तो जेंजी से गुफ्तगू अगर आपको करनी है तो आप वो ट्रूथ ढूंढे ना. और उनकी ज़ुबान बोले. मेरे ख्याल में सच्चाई की एक ही ज़ुबान होती है. हाँ. आपको नहीं लगता कि रियलिटीज़ बदलती जाती हैं वक्त के साथ साथ? जैसे अगर मिलेनियल्स की भी बात करें, कहते हैं कि उनको जेंजी के साथ डील करने में मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि जेंजी कहती है वी आर एम्बिशियस, हम बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन हम आपकी कॉर्पोरेट लैडर नहीं चढ़ना चाहते, हम अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते हैं. हमसे यानी अगर जेंजी से पहले वालों को देखा जाए, वो पोजेशंस पे खर्च करते थे, ये एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं. इनको कहीं बाहर जाके चीज़ें नहीं ख़रीदनी होती, इनको वहाँ के इमर्सिव कल्चर में जाना होता है. तो ये फ़र्क तो आया है. अब इसको किसकी हकीकत का बदलना कहेंगे? नहीं, मगर नहीं, लुक, किसी चीज़ को ख़रीदना या किसी एक्सपीरियंस से जो है, दैट we're talking about self-actualization. So Okay. whether that self-actualization is being derived from acquisition of an object or the going through an experience, I believe that at least, I mean, मैं एक मिनट के लिए हैबिट सिटी में अगर वापस आ जाऊँ तो the harmony of it coming together is that there are experiences to be had over here, whether that is our game nights or whether that is our sports screenings or whether that is our other festival. Yes. So those experiences are being had. और उस experience के अंदर अगर उसके साथ अगर other festival हो रहा है और उसके साथ एक book fair है या चांद रात पे एक मार्केट लगी हुई है और वहाँ पे बच्चियाँ बैठ के जो है एक सेफ एनवायरनमेंट में मेहंदी लगवा रही हैं और बराबर में जो है चूड़ियाँ भी बिक रही हैं और एंड दिस इज़ नॉट अस सेलिंग these चूड़ियाँ and this मेहंदी. These are independent, entrepreneurs. मतलब कि हमारे यहाँ there are so many weekend markets that we have over here. Only yesterday, I mean, I was giving a tour to someone and we walked into the Grand Tree district. And वहाँ पे जो है, there was this art exhibition happening जहाँ पे there were, I think, 20 or 30 artists sitting और हर एक ने अपनी जो है स्टॉल पे अपनी पेंटिंग्स लगाई हुई थी and लोग आके वो खरीद रहे थे और लेकर जा रहे थे. Absolutely. So is that when these people are sitting together and when someone is coming and appreciating that art and taking it back home, is that an experience? Is that commerce? एक other festival में आके buying a new book and getting it signed by the author, is that commerce? Is that an experience? That's life. So, life at its best, perhaps. So when you ask the question कि जी ये स्पेस आपने किस लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है, आपने Gen X के लिए बनाई है, आपने मिलेनियल की बनाई है, आपने Z के लिए बनाई है, this is where all of us come together and we are honest with each other and everyone can take whatever they want to take from it. I think the reason why I asked that was क्योंकि यूजली हमारे यहाँ जो कैफ़े कल्चर है या रेस्टोरेंट्स हैं उसमें लोग एक ख़ास तरह की ऑडियंस या क्लाइंटेल के लिए उसको क्यूरेट करते हैं कि यार इनकी सेंसिबिलिटी के लिए. बट आई स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेसन बाय आस्किंग यू व्हाट you've learned from your late father. Or as we are coming to a close of this conversation, Munis, my question to you would be, what did you learn from your children? When you spend time with them, उनसे क्या सीखा आपने? Being in the moment. I think one of the most fluid things in life is the span of a moment. So a moment can be as long as a lifetime or it can be as short as an instant. So mashallah, when you see your children laugh, and if you can internalize that, then that moment can be priceless and it can be as long as you want it to be. True. So बच्चों से क्या सीखा मेरे ख्याल में simplifying things. कभी कभार हम सोचते हैं and I end up thinking a lot most of the time.
Um, I I don't I have so many friends that I have no friends. Mm-hmm. Because anyone and everyone I meet, it is a friend, but I have no friends. Why? Because I am thinking all the time. तो बच्चों के साथ जो है वो सिंप्लिफिकेशन आ जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है. Mm-hmm. My last question. Munis, अगर जब भी आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद whoever is going to be the future CEO of the IBL Group, उसको क्या एडवाइस देंगे? Well, one of my jobs, I will be successful. Today, I am the only family member in a group of roughly 10,000 people that make the IBL Group. So, Alhamdulillah, I'm the only family member, and I I do nothing. And my job is to ensure that after me, there is no family member that is heading the group, Okay. and that it should run on its own. So when you talk about Values Day, and maybe that's a good place to wrap things up. हर साल 22 नवंबर को जो मेरे वालिद साहब की बरसी का दिन है, अब 3 साल अब गुज़रे हैं, तो पहले 2 साल मुझे ख़बर मिलती थी कि ग्रुप में जो सीनियर लीडरशिप है, दे गेट टुगेदर एंड दे रिमेंबर माय फादर. I never asked for them to do that, and I was never asked to join them also. But I would hear they came together and they There's shared. like a small tribute or remembrance that is happening. I don't even know what What to call it. what to call it or what was happening in the room, but I know that they got together. Okay. So this year I thought that let's make it official. And हमारे यहाँ जो है, मतलब हम मुसलमान हैं, जब हम सब ने जाना है तो जब हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, so we take 3 days to grieve and then we must move on. We must move on with our responsibilities and go ahead. Now, whatever pain that is inside, that is for you to carry. So the 22nd of November, when we called it the Values Day, we made it wasn't a celebration of my father's life, and it wasn't a barsi. It was actually to honor the values that he has left behind as a pledge to carry the torch forward. So आप अगर future CEO की बात करती हैं, I'm not that worried about the future CEO, because the future CEO is going to come from the organization that is there. And हमारी यहाँ जिस बच्चे को 5-10 साल होते हैं उसको हम कहते हैं ये नया है. So we don't offer jobs, we offer careers. And alhamdulillah, because the group is so diverse, we can move people from one industry to another industry, from a support function or a core function to a line function, and move them. मतलब कि फाइनेंस से किसी के अंदर कोई entrepreneurial drive नज़र आ रही है तो उसको उठा के हम बिजनेस मैनेजमेंट का रोल दे देते हैं. So people grow. So I am not that worried about the CEO. I'm more worried, or I'm more conscious about the core team and which includes the middle management. So you want like a strong foundation
an institution that continues to churn out the best quality leadership जो आप ही की values को believe करे and उसको आगे लेकर चले और future में भी उसको साथ लेकर चले. But what I was getting at is कि one leadership lesson or management lesson that you would want at least for the foreseeable future कि यार जो भी CEO IBL का हो उसको हमेशा ये guiding principle ज़रूर याद रहे. झुकता हुआ तोलो. I think that's beautiful. Thank you so much, Munis, for making time for us. And जिस तरह हमने पहले कोशिश की, झुकता हुआ तोलो को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, I think it's the best way to identify what excellence means and what service to others means and what service to community means. So once again, it was a pleasure to find this time with you, to have a conversation which is meaningful, which is substantive. Thank you very much, Munis, for being here. It's my pleasure. Thank you so much for having me. और इसी के साथ जी, this is the end of this conversation. Do send me your feedback and of course would love to hear what you thought about it. Till next time, take good care. Khuda Hafiz.